फिर उधर से सर आप माइनस हाफ से हाफ के बीच में आया, देन आप जीरो टू हाफ कैसे उसको बोल दिया, नेगेटिव तो ले बिकॉज सकते हैं आंसर फिर। कान बी आंसर कान बी नेगेटिव ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स रेज टू 4 है, आंसर विल नेवर बी नेगेटिव। हाँ हाँ ठीक। ठीक है, लेट्स टेक द D1 C1, यू कैन ट्राई इट फॉर होमवर्क, इट्स वेरी मच सिमिलर, एकदम सेम है। विल टेक द D1 log वाला। हाँ So we have log of 3x square minus 4x plus 5. Acha, they have राइट। written ln. So ln means log to the लॉग टू द base बेस e. ई, ओ सॉरी। So it is log to the base e of 3x square minus 4x plus 5. हाँ और यहाँ पे हम रेंज की बात कर रहे हैं। हाँ सर। See over here, Arush, we want all the possible answers of log of 3x square minus 4x plus 5. To find हाँ all the हाँ possible answers, if we can determine the minimum and maximum value, like the least answer and the highest answer, then our job is done. Like minimum यस maximum सर। अगर मिल जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये क्वाड्रेटिक का मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक हम्म। का। हाँ अब वो कैसे करते हैं, तो उसका जो प्रोसीजर है, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड क्रिएटिंग परफेक्ट स्क्वायर। We'll try to create a perfect square. So I'm solving this separately. We have 3x square minus 4x plus 5. We have to create a perfect square here, और creating a perfect square का एक formula होता है. So if you don't know this, you can write this down. Creating perfect square. सर इसमें वैसे अगर मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है तो मैक्सिमम मिनिमम लगा सकते हैं अगर वो डिफरेंशिएशन Derivative का। का procedure वो भी कर सकते हैं. हाँ We can do that. वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना। That can also be done. It's your choice. You can do that also. तो तो वो ये भी सीख लेते हैं और वो भी देख लेते हैं. सो क्रिएटिंग परफेक्ट स्क्वायर जो है, इन क्रिएटिंग हाँ परफेक्ट स्क्वायर द फॉर्मूला इज थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर. बट फॉर दैट थर्ड टर्म आरुष, द रूल इज कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ओवर हियर? सर हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3। So I'll first take 3 common. हाँ So we have x square minus स्क्वायर 4x में by 3 plus 5 by प्लस 3. 5/3। हाँ चलो, now tell me what is the third term? 4x 4/3। गलत. हाफ सर इंटू उसके 4 कोएफिशिएंट क्या बाई देना थ्री चाहिए? अच्छा हाफ इंटू वैसे। कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर. अच्छा तो ये 4/6। 4/9, 3 का स्क्वायर इज 9. हाँ नहीं मतलब 4/6 एंड देन उसका स्क्वायर, उसका नहीं, भी क्या स्क्वायर बोल रहा है करेंगे। तू, क्या बोल रहा है तू? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर है ना। अच्छा, 4/6 बोल रहा है तू, हाँ ठीक है. विच इज 2/3, 2/3 का स्क्वायर इज 4/9. ठीक हाँ है. So do you realize these first three terms will be a formula? So this is x minus 2/3 the whole square. और जो बाकी है, when we take LCM, what will we get? So we get, this is 3 by the way. So 15 minus 4, we will get 11/9. Check this. Are you following this? And when हम्म, you open the brackets, this will be 3 into x minus 2/3 the whole square plus 11/3. ये समझा तुझे? हाँ Now what is the minimum value of this square वाला term? सर स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? जीरो होगा सर। जीरो. तो इसका मिनिमम वैल्यू अगर जीरो है तो ये क्वाड्रेटिक का एक्स मिनिमम का। वैल्यू क्या हुआ? मिनिमम वैल्यू 11/3 हुआ. हम्म। सो डू यू रियलाइज आरुष, इसका जो रेंज है that will be from ln of 11/3, because that is the minimum value. ln इसलिए क्योंकि ln हाँ ऑलरेडी है ना.
अंदर वाले का हाँ मिनिमम वैल्यू 11/3 है, so it's ln of 3. एंड log एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एंड log फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा इन्फिनिटी होता है. It will just keep going हाँ on till infinity. So that's the answer. हाँ Ln 11/3, infinity. ठीक है. आंसर इसको भाई डिफरेंशिएट डबल डिफरेंशिएट कर लेंगे फिर वैसे. Correct. वो भी कर सकते हैं. We can do that. Sir, I was right at that except because of देख डेरिवेटिव वाला जो मेथड है ना, हाँ तो उसमें f of x is 3x square minus 4x plus 5. So we take the derivative, equate it with 0. So 6x yes minus 4 is equal to 0. So x is 4/6, which is 2/3. Now when we get only one value of x, that means either the function will have only minimum or only maximum. yeah And here we know maximum तो anyways is not defined, it's infinity. So this means it is minimum at x equal to 2/3. So the thing is कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है ऑलरेडी कि मिनिमम ही होगा हाँ और x equal to 2/3 पे होगा. So we can directly हाँ replace this x with 2/3. So 3 into 2/3 the whole square minus 4 into 2/3 plus 5. So this will be 3 into 4/9 minus 8/3 plus 5, which is 4/3 minus 8/3 is minus 4/3 plus 5. So 11/3 yes sir. ठीक है. So now let us take these questions. First question: greatest integer function of x square is greater than 3. हाँ See, greatest integer function का जो आंसर होगा that is always integer. So when they say greater than 3, that means the answers are 4, 5, 6, 7 and so on. yes Do you realize, Arush, the answer will be 4 if the number is between 4 and 5, like 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. yes Correct? yes So do you yeah realize that x square has to be greater than equal to 4? Like it has to be 4, 4.1, 4.2, 4.3 and so on. It can be anything after that. सर 2 पॉइंट समथिंग भी तो हो सकता है तो फिर उसका लाइक 2 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर विल बी 4 आ रहा हूँ पॉइंट मैं उस पर. समथिंग. आ रहा हूँ. हाँ See, I'm not talking about x, I'm talking about x square. तू x की बात ओके कर रहा है. So you have to now हाँ understand x square greater than equal to 4 means x will be either what you're saying 2 point something, मतलब more than 2, like 2 to infinity, or it will be negative infinity to negative 2. देखिए समझा कि नहीं? हाँ सर. So that's the answer. तो first वाले का आंसर आ रहा है Q. Then shall we take the next one? हाँ सर. See, second, do you realize this looks like a quadratic equation? Like अगर हम greatest integer function x को अगर y लिखे suppose, so this will be y square minus 5y plus 6 equal to 0. चलो solve this quadratic, find the values of y. But sir, are you getting y is 2 or 3? Yes sir. Which means greatest integer function of x is 2 or 3. Yes sir. Now see, greatest integer function of x will be 2 when x is 2 or 2.1, 2.2, 2.3. Yeah. And greatest integer function का आंसर 3 कब आएगा? जब 3.1, 3.2, 3.4 up to 3.9 होगा. हाँ. तो आंसर will be 2 to 4. 2 to 4. But 4 is not Yes. included क्योंकि greatest integer function of 4 is 4. 4. हाँ.
तो इसका आंसर P हो जाएगा. P is the answer. हाँ. स्लो करो. चलो नेक्स्ट इज x is equal to fractional part of x. कोई भी नेचुरल नंबर होगा सर तभी होगा ये. नहीं नहीं नहीं, सी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आंसर इज ऑलवेज 0 पॉइंट समथिंग. यस सो इसलिए. अच्छा हाँ रुको. यस यस. नॉट पॉसिबल. नहीं, इट इज पॉसिबल only when number is between 0 and 1. दिस वोंट बी पॉसिबल. If the number is between 0 and हाँ 1, हाँ Arush, ठीक है. 0 point something, so in that case it is possible. Next thing, fractional part of x is equal to greatest integer function of x. See, fractional part of x का फॉर्मूला क्या है? या चल छोड़, फॉर्मूला भी छोड़, इसको नॉर्मली सोचते हैं. फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर will always be between 0 and 1, like 0 point something. हाँ. Now do you agree कि greatest integer function का आंसर is always integer? Yeah. So do you realize, Arush, the So only possible the only possible answer is 0. Like both have to is be 0 zero. और दोनों का आंसर 0 हाँ. होगा. तो इसका आंसर R होगा. हाँ. 0. Next, greatest integer function of Yeah. x is less than minus 5.2. So So greatest your integer voice function. is cracked. Yeah, Arush, can you hear me now? So इसका s. Yeah sir. It will be s minus infinity to minus 5. Excellent. Correct. Minus infinity to minus 5. So that is perfectly right. Yes. Next, acha, before we take the next one, we have to discuss something called as Sinum function. We have not yet discussed this. Sinum function. Yes. तो साइनम फंक्शन का सिंबल ये है, साइनम फंक्शन ऑफ एक्स, और इसका फॉर्मूला है mod x upon x, or we can also write it as x upon mod x. This is the basic definition. अब है ना, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं using mod x Okay. का definition. We know that mod x is x when x is greater than equal to 0, Yeah. or it is minus x Yes. when x is less than 0. हाँ. So do you realize sinum function में अब है ना different possibilities है. So first we will take the possibility when x is greater than 0. Second we will take the possibility when x is less than 0. Yes So sir. Arush, if x is greater than 0, can I replace mod x with positive x? With x. Yeah. What is x upon x? It's 1. 1. अच्छा, Yes. when x is negative तो यहाँ पे आ जाएगा minus x, Minus x. तो उसका आंसर आएगा -1. Minus 1. एंड इसमें ना एक assumption होता है that when x is equal to 0, answer is 0. Now you have to understand कि actually अगर x Yes. 0 होगा तो तो ये जो नॉट अपना डिफाइंड हो जाएगा. not defined होगा. So this is one assumption which we take. That is how the function is defined. When x is 0, answer is 0. Okay. Chalo, so now check this question. F 1 plus x is equal to sinum function of x. See, do you realize now there are different possibilities? Like we will get 1 plus x will either be -1, or 1 plus x will either be 0, or 1 plus x will be 1. These are the different possibilities.
Sir, 1 plus x will be minus 2. Sorry, 1 plus x will be 2. या तो वो हो जाएगा सर, माइनस हुआ भी है तो जीरो होगा. 1 plus x 2 होएगा. If क्या x बोल रहा x है? will be 1. क्या बोल रहा है? अच्छा, सिग्नम 1 plus सिग्नम फंक्शन x कर साइनम फंक्शन x करके ले रहा था. सॉरी सॉरी. So we'll get different answers. कुछ X is और पूछ रहा minus था. 2 आ रहा है. Done. X is minus 2 is the answer. हाँ. Yes it is. Are the following functions identical? A is clearly not identical. नहीं, not identical. B जो है f of x equal to x and phi x equal to root x square. So this will be identical. Hmm. Actually, wait, they will also not be identical. Because if let's say Arush, we take a negative value x equal to The minus 4. plus minus sorry. No, it's not about plus minus. See, if we take a negative value x equal to minus 4, तो इसका आंसर माइनस 4 आएगा. बट इसका आंसर बट क्या ये आएगा? तो हाँ ठीक है. ये प्लस 4 होगा. ये प्लस रूट 4 आ 16 जाएगा which is इसका. plus 4. हाँ. ठीक है. And yeah, this is identical. This is identical. अगर ये सर x raised to 3 होता तो नॉट आइडेंटिकल हो जाता ना. हाँ. Next, area of the region enclosed by the solution set of greatest integer function of x into greatest integer function of y is equal to 2. हाँ. See, greatest integer function means the answer is integer. Yes. Okay. So do you realize here multiplication of two integers is 2? हाँ सर. And when is this possible? This is possible Two, if the two numbers are into 2 one. and 1. So do you Yeah. realize the first possibility will be greatest integer function of x is 2. Second is greatest integer function of y is 1. And if greatest integer function of x is 1, then greatest integer function of y is 2. These are the two possibilities. हाँ. Yes sir. अच्छा, greatest integer function of x is 2 का क्या मतलब है? That x is between 2 and 2 and 3 graph. and Yes. y is between 1 and 2 2. and 1. और यहाँ पे ये होगा x is between Yeah. 1 and 2 और यहाँ पे होगा y is between 2 and 3. इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं. See, for the first case, x is between 2 and 3 का क्या मतलब है कि x is 2 पे एक लाइन होगा, हाँ. x is 3 पे एक लाइन होगा, and the region is between these two. So the region into consideration is this region. Next, y is between 1 and 2 का क्या मतलब हुआ? That y is 1, y is 2 पे ऐसे लाइन्स होंगे और उसके बीच का हाँ. जो रीजन है that is into consideration, this region. Yeah. And what is the common region? The common region will be this. Yes. इसका एरिया चाहिए. So this is 1 unit, this is 1 1. unit. Here is 1 1. square unit. 1. इसमें फिगर थोड़ा चेंज होगा बट आंसर सेम आएगा, एरिया सेम आएगा. Same आएगा. Yes sir. Sir, I'll write that. Take 7 sir. ठीक है. So Arush, in this question
we have f of x equal to greatest integer function of x plus summation of r equal to 1 to 1000 fractional part of x plus r upon 1000. ठीक है, let us understand what's happening here. वैसे तो orally हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा लिख देता हूँ तो तुझे पैटर्न समझेगा. So first value of r is 1, हाँ second value of r is 2, third value of r is 3, and last value तो of सर r is हाँ 1000. तो ऐसे 1001 into fractional part of x by 1000 करके लिख सकते हैं. Now let's understand this with 1001 example. terms हो जाए. Let's understand this with Yes. example. So do Yeah. you realize that fractional part of, let's take an example, 0.7 is going to be 0.7. 0.7. What is Yeah. fractional part of 1.7? 0.7. That is 0.7. What is fractional part of 2.7? Even that is 0.7. What is fractional part of 1000.7? Even that is 0.7. So do you 0.7. realize fractional part of all these numbers are actually equal to fractional part of x? Yes. अच्छा, और ऐसे कितने टर्म्स है? ऐसे टोटल 1000 टर्म्स है. 1000. तो 1000 टाइम्स हम जब किसी चीज को ऐड करते हैं, द आंसर विल बी 1000 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x Yes, upon sir. 1000. Yes, sir. So the answer is greatest integer function of x plus fractional part of x. Yeah. अब है ना, इसको समझते हैं थोड़ा. Let's take an example that we have x is 7.9. ठीक है. For this, what is greatest integer function of x? 7. 7. What is fractional part of point. x? Do you 0.92x. realize Yes. इसका एडिशन x है? हाँ सर. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आंसर क्या हुआ? x हुआ. x हो गया. That's the answer.